Hello everyone, welcome to next video of Indian economy from 1950 to 1990. In the previous video we've already done about agriculture and the new agriculture policy. Today we'll be talking about the next sector, that is industry. Now industry is a second or the secondary sector of the country. Now this is a very important sector. When we got independence, industry was only contributing around 10% of the GDP and only about 15% of our workforce was employed in industry. Why was industry so important for us to develop? Because industry will help us to create employment. When we will have industry, there will be increase in output, hence leading to increase in national income. Also, if we set up industries at various areas in the country, it will lead to promote regional balance. That is, all the areas will be developed. When we have industries like iron and steel and tractors, machinery, agriculture altogether will improve. There will be modern methods of production, and all this will again lead to growth. But at the time of independence, we had a lot of problems in this sector. First problem was sectoral imbalance. Sectoral imbalance means that in industry and agriculture, they were sectorally, they both were not developing. Under agriculture had a lot of disguised unemployment, while industry did not have employment at all, and there was no capital present. High cost of producing any good, production बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट होती है. जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. आपको कोई भी फैक्ट्री लेआउट करनी है, अगर आपको फैक्ट्री सेटअप करनी है, कॉस्ट इन्वॉल्व इज़ वेरी हाई. देन वी हैड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. तब तक 1950 तक हमारे गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था. एंड देयर वाज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी. कोई मशीन को अगर हम यूज़ कर सकते थे, हम उसको कम यूज़ कर रहे थे. So these were the problems of industry sector. Therefore, there was a need to develop industry in a very systematic manner. In order to do so, we came up with what we call as industrial policy resolution. Let us see what that is. Talking about industrial policy resolution, or we call it IPR, introduced in 1956, it talked about 4 important steps to be taken. First, it said there should be a threefold classification of all the industries. Second, there should be industrial licensing. Third, industrial shops. And fourth was development of small scale industries. Let's talk about them one by one. First was threefold classification of industries. According to IPR 1956, all industries, be it steel, food, FMCG, toys, garments, textiles, gas, everything was divided into 3 parts: Schedule A, Schedule B, and Schedule C. Schedule A, all the industries which were under Schedule A were reserved only for the government sector. Only government can manage, own and control these industries. There were around 41 of these industries involving liquor, steel, cement, gas, iron ore. Or that time you had hospitality. All these came under Schedule A. Railways, defense, electricity, that is power we call it, all that came under this public sector, that is Schedule A, in 1956. Schedule B involved companies which will have both public as well as private sector. That means there will be some industries which will be owned by the government and some will be private. For example, we had automobile industry that time. There were 1 or 2 players who were government introduced and 1 or 2 were private. Okay. And third, we had only companies which were only for private sector, Schedule C. For example, किराने की दुकान हो गई हमारी, ठीक है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री हो गई हमारी. ये सब क्या किया था? गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफेयर, इट वाज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर. तो गवर्नमेंट डिवाइडेड इंडस्ट्रीज इनटू 3 पार्ट्स: Schedule A, Schedule B, and Schedule C. You must note Schedule A, very importantly, that time 41 industries were reserved in Schedule A, which was later reduced to 27, then to 8, and then to 3 industries, and now only 2 are reserved in Schedule A. That is your railways, that is your atomic energy and your defense, not railways. Okay, so this is this. Now that time public sector, why was it given so much important? Because public sector was given so much importance in development of industry, because industry development के 2 important चीज़ें होती थी. पहला, when you are supposed to develop an industry, you need a lot of huge amount of capital.
ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, जब भी कोई इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उसके लिए कोई सोशल बेनिफिट, कोई सोशल वेलफेयर तो नहीं कर रहे, इसलिए पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था। वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द कमिंग वीडियोज़, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम बैक हियर ओनली। Threefold classification: Schedule A, Schedule B and Schedule C. Only for public sector, public and private both, and only for private. Coming to next, government introduced industrial licensing. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मीन्स अगर आपको कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री खोलनी है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नाउ दिस वाज डन टू मेक श्योर कि खाली मोनोपोली ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए खाली एक ही बंदा जो है वो कंपनी खोल के बैठ गया और उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और बाकियों को वो ना आने दे, इसलिए लाइसेंसिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। Third is industrial SOP. SOP means concessions. Government used to provide various concessions to the industrial houses so that they can open up the industries in hilly areas, rural areas. उनको टैक्स हॉलीडे मिलता था, टैक्स हॉलीडे मतलब 1 साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बहुत कंसेशनल रेट्स पे मिलता था, लैंड बहुत कंसेशनल रेट्स पे मिलता था, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सॉप्स। नाउ बिकॉज ऑफ दीज सॉप्स various business houses used to come forward and open new industries. And fourth was development of small scale industries. Why was this important? Because small scale industries are basically labor intensive industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो हम खोलते हैं रूरल एरियाज़ में, जो बहुत ही कम कैपिटल आउटले से खुलती हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10 करोड़ का आउटले होता है, उसके ऊपर नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ना लेबर इंटेंसिव होती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत कम पैसा इन्वॉल्व है इनमें, ज़्यादा पैसा ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्वियसली जब सामान बनेगा तो ग्रोथ होगी, और जो लोकल एरिया है वहीं के आर्टिसंस लेते हैं, वहीं की एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, इसलिए लोकल एरिया सारे डेवलप होते हैं। नाउ दीज इंडस्ट्रीज़ आर अ सी बेड फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज़। ये छोटी छोटी चीज़ें प्रोवाइड करती है, नट्स प्रोवाइड कर दिए, बोल्ट प्रोवाइड कर दिया बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। जूट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उसको छोटा सा कुछ फाइबर्स चाहिए जूट के, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड करती हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर बेसिकली प्रोवाइडर्स टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। So now we have talked about what is industrial policy resolution. In the next video, we'll be talking about role of public sector.